Good morning to all of the students. We are on the classification of the plants, chapter 6. Yesterday we discussed about the Pteridophyta. Now we will discuss about the BRYOPHYTA. BRYOPHYTA, they are telling you may have seen, बोलते हैं ना लस ग्रीन शॉप क्रॉप, बोलते हैं ना कारपेट देखे होगे, पूरा कारपेट ग्रीन ग्रीन कलर के बोलते हैं ना, अलग पूरा गुच्छा रहता है जो बोलते हैं ना वॉल्स पे लगा रहता है, नमी की तरह हम लोग बोलते हैं. Then you have seen in the bricks also and the rocks also. In many of the rocks बोलते हैं ना वॉल पे देखे होगे, दीवार पे देखे होगे. तो यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व किए होगे कि कैसा रहता है, पूरा ग्रीनरी रहती है इसमें. In the during rainy season times, it generally with that we can say with a ruler also, बोलते हैं ना एक रूलर लेकर अगर तुम लोग रब भी करोगे ना, ये पूरा ग्रीनरी आउट हो जाएगा. तो observe it, magnifying lens. If you will see in a magnifying lens now, then you will come to know it is the group of the BRYOPHYTA. Why it is growing? Then we are telling the group of the plant is called amphibian. ये कैसा है, हम लोग amphibian group में आता है ये of the plant kingdom. Because they grow in a moist soil. थोड़ी बहुत नमी भी रहती ना, ये soil में easily grow हो जाते हैं. And they want a reproduction for water. No, they only want. बोलते हैं if little bit water also there in wall also, in bricks also, in rock also, they can easily grow. So these plants are we are telling thyroid. Just see the category of the thyroid they given and the down figure 6.2. Just see the funaria is there, mesenteria is there, anthorus is there. This all category we are telling as in a thyroid are there multicellular and autotrophic depending on the sunlights. Autotrophic you know very well, with the help of sunlight they can easily grow, but they want a little bit water. हर जगह बोलते हैं ना, हर जगह पे वॉल पे नहीं ग्रो हो जाते, वो बोलते हैं ना वो वॉल पे ग्रो होगा जहाँ पे वॉल पे बोलते हैं ना पानी रहेगा, थोड़ा बहुत भी नमी रहेगी. नाउ दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर मीन्स जो डॉट डॉट फिगर रहते हैं, जो डॉटेड रहता है, मीन्स प्लांट के अंदर से बोलते हैं ना कुछ डॉटेड स्पॉट्स गिरते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट डॉट दे क्या इजीली ग्रोइंग. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी ऑफ द BRYOPHYTA दे आर टेलिंग इज इन फ्लैट, फुल्ली फ्लैट रहेगी. दे आर टेलिंग रिबन लाइक स्लॉन्ग, एकदम कैसे रिबन रहती है ऐसी रिबन करके बोलते हैं ना फुल्ली फ्लैटन में रहता है. एंड विदाउट रूट, द रूट्स आर नॉट देयर इन दिस कैटेगरी. स्टेम इज ऑल्सो नॉट देयर and the leaves are also not there. Inside they have the stem like, but you will see they have the stem like structure. Then I already told you the stem is not there, leaves are not there, but then also they have the stem like structure or leaf like plants, leaf like parts, and the root like rhizoid. Rhizoid means like in a hairy type roots रहेगी, बोलते हैं एकदम पतली सी रूट रहेगी, hairy type rhizoids we are telling here. They do not have specific tissues for conditions of food, बोलते हैं ना specific condition नहीं रहती, मतलब कोई भी condition में easily grow जाते हैं, food and water. Example are most they are telling Phanerogamia. Just see the figure downward they given in the 6.2 figure. Then the anthros they given the second figure, third figure, and the mesenteria and the riccia. This all type of the things are growing easily in the wall, in the rock also. Now if you will see carefully in the funaria, how the given stalk are there, capsules are there. From the capsules it is mean the spores are forming. Spores are means और फॉर्म मीन्स स्पोर्ट्स गिरते रहते हैं. और लीफ लाइक प्लांट्स तुम लोग देख सकते हो. राइजोड्स मैंने बोला जैसे कि हैरी टाइप रूट रहते हैं. इन द सेकेंड ऑल्सो राइजोड्स जस्ट सी दे गिवन इन द mesenteria फिगर. लीफ लाइक पार्ट्स आर ऑल्सो देयर. हाउ द फ्लैट एंड लीव्स आर देयर, जस्ट ऑब्जर्व देयर. लीफ लाइक प्लांट्स, stalks are also there and the capsules. Now just observe anthers. In the anthers you will see the capsules are there, but you are observing that dotted spot. That dotted spots we are telling as a spore. From the spores again this kind of the anthers, mesenteria, all these things are growing easily. Now third are coming in the Pteridophyta. Pteridophyta you have seen when you are going in the gardens. When you are going in the garden you will observe, you have seen some ferns about the ornamental plants like in a gardens. गार्डन में तुम लोग ऑब्जर्व किए गए होगे ना, तो कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं डायरेक्टली बोलते हैं ना बिना फ्लावर्स के ग्रो होते हैं. मीन्स उन लोग को कैसा लगता है, मीन्स फॉर द ग्रीनरी दे आर ग्रोइंग. As example of the ferns, just see they given they have the root and the leaflets. Then the sporangia in sori on the leaflet. Spores बोलते हैं ना sporangia कुछ बोलते हैं ना कैप्सूल्स में से फॉल होते हैं, कुछ फ्लावर में से फॉल होते हैं. और इधर ऑब्जर्व करो लीफलेट में देखो कैसे सोरी दिया है, सोरी sporangia here. From this सोरी also they can easily grow. These are the category of the they are telling us a Selengia and the Lycopodium. ये तुम लोग गार्डन में easily देख सकते हो Pteridophyta divisions में. Now in Pteridophyta you will observe plant grow from this have a well developed roots. इसमें अच्छे खासे roots रहते हैं. Above we have seen in the BRYOPHYTA, here we have seen in the BRYOPHYTA the stems, roots, all thing was not there. But in this category you will observe stem is also there, root is also there, and the leaves is also there. And the for separate tissue, there are separate tissue for the food and the water. एक अलग ही tissue होता है जिससे food और water grow हो सकते हैं, but they can't grow
flowers and the fruits, but in this category flower and the fruits will not come. हाँ, यहाँ पे flower और fruits नहीं आते हैं. These means again with the help of the source we can say spores, they are easily growing, the reproduction take place. हाँ, but these spores are on the leaves. You will observe ये spores कहाँ पे रहते हैं, leaves पे रहते हैं. Example like fern like Nephrolepis marsilia, Teres, Identa, Equisetums, and Selegenelia, and Lycopodium, etc. This all kind of the plant you will observe in a garden or on the roadside also they are growing. You will observe roadside में भी तुम लोग observe करोगे, जाओगे ना तो तुम लोग ऑब्जर्व करके दो बोलते हैं ना ब्लॉकिश टाइप में उन लोग ग्रीनरी बोलते हैं ना प्लांट्स लगा के रखते हैं. अब ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर कुछ बहुत से प्लांट ऐसे रहते हैं. इन दिस लॉट ऑफ द प्लांट यू विल ऑब्जर्व द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स आर नॉट देयर. योर कैटेगरी रिमेंबर दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, असेक्सुअली बोलता है ना, ये असेक्सुअली ग्रो होता है, बट विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेंटेशन दे आर ग्रोइंग, एंड सेक्सुअली बाय द जाइगोट फॉर्मेशन. सेक्सुअली कैसा होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जो फ्लावर्स के थ्रू. दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज, बोलते हैं इसमें अच्छा खासा टिश्यूज के कंडक्टिंग रहते हैं. मीन्स इफ द स्पोर्स आर लिटिल बिट ऑल्सो फ्रॉम अ सिंगल स्पोर्स दे आर इजीली ग्रोइंग. बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द प्लांट्स, बोलते हैं ना ज़्यादा ये जंगली घास बोलते हैं हम लोग इसको, ये बहुत से ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं. यूज योर व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन प्लांट्स ऑफ द ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. और टेरिडोफाइटा में हम लोग ने क्या देखे, स्टेम्स और रूट्स रहते हैं. ब्रायोफाइटा में हम लोग ने क्या देखे, स्टेम्स और द रूट्स एंड द स्टेम्स आर एब्सेंट. इन द थैलोफाइटा yesterday we have seen some of the places the stems are there but the roots are not there like this way. All these plants have spore formations, but कैसे ग्रो होते हैं, the similarity in this is what the spore are there. With the help of the spore they are easily growing, and they are called, we are telling as a cryptogram categories. We are telling as ना ये cryptogram categories में आता है. हाँ, they are the cryptogams. Yeah, as the reproductive organ cannot seen, means in the reproductive organs are not, means reproductive organs are absent, means with the help of the spore they are easily growing. But in the case of the Pteridophyta we have seen they are growing with means spore formation, means asexually also and sexually also. हम लोग ने देखे स्पोर फॉर्मेशंस में टेरिडोफाइटा में सेक्सुअली भी ग्रो होते हैं और असेक्सुअली भी ग्रो होते हैं. बट इन द केस ऑफ द थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा वी हैव नॉट सीन दिस वन, मीन्स इन द स्पेशली विद द स्पोर दे आर ग्रोइंग. मीन्स स्पोर मतलब तीनों की एक सिमिलरिटी क्या है कि तीनों में स्पोर फॉर्मेशन से ही ग्रो होते हैं. ना फेनोग्राम्स, फेनोग्राम मीन्स यू विल ऑब्जर्व, बट इन द केस ऑफ द क्रिप्टो मीन्स द हाइडन सीड्स वी आर टेलिंग. ये क्या होता है, हाइडन सीड्स. देन हाइडन CRPTOGAMS means crypto means hidden and gums means reproductive organ में. Here the reproductive organs are totally hidden, हम लोग देख नहीं पाएंगे इसमें. Now phanerogram, phanerogram means plant which have the special structure for the reproductions. Now above we have seen कैसे grow हो गए थे with the help of the spores. But in the phanogram category here special organs for the reproductions are there, and with the help of the seeds they are easily growing. And here the seeds are present, produced by seeds, मतलब ये seeds के through with the help of the seeds they are easily growing. Here remember, with the help of the seeds they are easily growing. Okay, and produce seeds, बोलते हैं ये जो seeds grow होते हैं with the help of the phanograms. तो ऊपर हम लोग ने सीड्स की बात नहीं किए थे, याद रखना. यहाँ पे सीड्स है बहुत से. इन दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे रिप्रोडक्शन होता है ना, तो यहाँ पे सीड्स आर फॉर्म, कुछ बोलते हैं ना रिप्रोडक्शन के टाइम पे सीड्स फॉर्म हो जाते हैं. ऊपर रिप्रोडक्शन कैसा था, विद द हेल्प ऑफ द इन द क्रिप्टोगैम कैटेगरी द वी कैन से स्पोर फॉर्मेशंस दे आर टेकिंग अ द ग्रोइंग टेक प्लेस, बट हियर विद द हेल्प ऑफ द सीड्स द ग्रोइंग स्ट्रक्चर टेक प्लेस. नाउ द स्टोर फूड इज वी कैन से फॉर द इनिशियल, द स्टोर फूड इज कंटेन द एम्ब्रियो एंड द स्टोर फूड्स आर, होता है ना जो फूड स्टोर जो रहते हैं इसमें. नाउ सॉरी, सीड्स आर फॉर्म विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड द स्टोर फूड. जो सीड्स फॉर्म होते हैं ना जो एम्ब्रियो के अंदर रहते हैं, हाँ, दैट इज इनसाइड द एम्ब्रियो एंड दे आर कंटेन द दे आर स्टोरिंग द फूड्स ऑल्सो. नाउ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स मीन्स हाउ द सीड्स कैन ग्रो. द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर द इनिशियल ग्रोथ, जो फूड जो स्टोर रहता है ना एम्ब्रियो के अंदर, विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रूट द embryo means in the embryo whatever the foods are there, with the help of that the growth will take place, means the reproductions are take place with the growth, means the height of the plant, all these things are take place depending how much foods are inside the embryo. Now depending upon whether the seeds are enclosed in a fruits, now there are two types of the seeds. Some of the fruits in fruits we have seen, in fruits
the seeds are inside, or some of the fruits we can say the seeds are outside. तो ये whether the seeds are enclosed in a fruits, हाँ कैसे क्या बोल रहा है कि fruits inside में है कि outside में है. तो inside or not, they are telling. Phanograms are classified into two categories, gymnosperm and the angiosperms. Here the two categories are there, gymnosperm and the angiosperms. So in the phanogram first we will see as in a division one, that is gymnosperms. Here we will see the hidden in the garden. You will see the cycas, Christmas tree. Just see the figure. Cycas, a Christmas tree is there. Hibiscus are there. Christmas tree, if you want to observe now in the building places, you will go. There lot of the trees are there. Heighted trees are there. How the zigzag leaves are there. That one. Hibiscus are there, lily, etc. All these kind of the plants are coming in the gymnosperms. And now note the similarity. What kind of the similarities are there that we have to observe? Which difference did you notice? Now what you will observe, what kind of the difference are there that we have to notice in the gymnosperm and the angiosperms. Now we will see about the gymnosperms. Gymnosperm, they are telling actually evergreen plants are there. They are perennial, means lot of the roots are there. Just see in the perennial structures how the cycas trees are there. The gymnosperm, they given a category, the downward figure also you will observe. And they are the woody. Woody means the stone, wood type of the structure are there. In the wood there are leaves are there, but like an internal, we can say zigzag lining are there. The stems are without branches. जो stems रहते हैं ना, branches नहीं रहते. The leaves for a crown. Whatever the leaves are there, like in a like crown type रहते. Whatever the leaves होते हैं ना, जो leaves रहती है ना, एक तरह का crown रहता है. इस पे ऐसा लगेगा ताज लगा हुआ है इस पे. These plants bear a male and the female flowers on different sporophylls. In this plant, you will observe the male and female flower, both the categories are there, but they are in the different. बोलते हैं अलग अलग sporophylls में रहते हैं. Of some plants, means in some of the plant only you will see a male, and some of the plants you will see a only female will be there. But in some of the plants you will observe in the gymnosperm category, both we can say male and the female category take place. Now here seeds of these plants, they are telling do not natural covering. Here the natural covering is not there in the gymnosperms. Plant do not form fruits. यहाँ पे fruits नहीं आते gymnosperm में, and therefore called gymnosperms. Because of that we are telling as in a gymnosperms. Gymnos means net and sperm means seeds. मतलब next seeds बोल रहा है, मतलब जो छुपी हुई बोलेंगे. Example cycas piscia, that is we are telling as in a Christmas tree. ये Christmas tree होता है. Thuja, that morphoncaria, Pinus, deodar, all these things are there. If you will go in the garden ना, this kind of the plants are there. जो होता है ना, जो प्लांट के पे ज़्यादातर फ्लावर्स नहीं रहते, समझ जाने का, वो सब एक कैटेगरी आती है. बट यहाँ पे मेल और फ्लावर दोनों बोलते हैं ना, मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही रहेंगे. बट इन दिस कैटेगरी फ्रूट्स नहीं रहेंगे, बोलते हैं ना, इसमें फ्रूट्स नहीं आते हैं. अगर फ्रूट्स आते रहते हैं तो गार्डन पे ऐसा प्लांट्स नहीं लगाते. यू विल ऑब्जर्व, अगर फ्रूट्स आते रहते, अगर बोलते हैं ना, अगर फ्रूट्स रहते प्लांट्स पे, हाँ बहुत से गार्डन में हम लोग, इफ़ यू विल गो इन द गार्डन इन लॉट ऑफ द प्लेसेस यू विल ऑब्जर्व ओनली प्लांट्स आर लाइक इन अ फ्लावर टाइप्स. दे डोंट हैव अ फ्रूट्स. For the fruits plants we have to grow specially mango tree, all this different kind of the trees. Now then angiosperms. तो soak the seeds of the corn. Corns पता होंगे आजकल मिलते हैं. Corn you are there, beans are there. Beans जो मूंगफली वो सब खाते रहते. Ground nuts, all this grains, ground nut, ये सब हम लोग मूंगफली वो सब कैटेगरी खाते रहते. Tamarind, you know very well, mango, wheat, etc. You have to soak, तो ना पानी में गिल्ला करना है. First you have to put in the water and then you have to put for the 8 to 10 hours. After they soak, जब तक पूरा तेरा सूख जाएगा, check each seeds to see whether it divide into equal halves. Then you have to observe whether they are dividing into two parts और equally divide है कि नहीं है or not, and categorize. We have to category. Now the flower this plant bear, we can say the flower of this plant, they are telling us in a bear their reproductive organs. In this their reproductive organs are there in these plants. But then in angiosperms, whatever the flower you will see, in this flower you will observe the reproductive organs are there. But in the above we have seen in dicotyledons, the reproductive organ was hidden. It is not inside the flower, they are telling here on the above category. But here the reproductive organs are there, but here. And flower develop into fruits. Whatever the flowers are changing into fruits, and seeds are into form within the fruits. जो seeds रहते fruits के अंदर ही रहते. As you have seen the mango, how the mango we are eating and after that we are getting the seeds like this way. There are different lot of the plants are there. If you will eat the apple, all this thing, हम लोग एप्पल भी खाएंगे तो एप्पल के अंदर ही क्या रहता है. इन द एप्पल you have observed what the seeds are there. Inside the seeds are there. So lot of the plants that the whatever the lot of the plants in that fruit, the seeds are inside, not that is outside. Now the equal house or dicotyledons.
are called dicotyledons planus. Dicotyledons means two part में divide है or more than two, or only two, di means. And those whose seeds cannot be divided into equal halves, whatever the seeds that not divided into equal halves, that we are telling as a monocotyledons, means the seeds that not divided into two parts and the seeds will only in the one part, that we are telling as a monocotyledons means a single seed, and dicotyledons means more than one seeds or only two seeds. Dicotyledons we are telling as in a two seeds. You will observe in the case of this apple, I told you, in apple more than two sets are there. So there are a lot of the fruits are there that consists of more than two seeds or three seeds, or not three seeds, more than two seeds. Just take an examples. Now here monocotyledons plant means a single seeds and dicotyledons means two seeds here. So we will see and observe the difference. So first see the figure. मस्टर्ड एंड मेज ट्रीज. मस्टर्ड देखो तुम लोग नीचे दिया है फिगर, लेफ्ट डाइकोटिलेडोन में दिया, और मेज में देखो सिंगल मोनोकोटिलेडोन्स जो कोन बोलते हैं हम लोग. हियर ऑब्जर्व, टू कोट इन द सीड्स देयर टू कोटिलेडोन्स. यहाँ पे डाइकोटिलेडोन्स में दो सीड्स रहते हैं और मोनोकोटिलेडोन में सिंगल्स कोटिलेडोन सीड्स रहते हैं. रूट आर वेल डेवलप एंड प्राइमरी रूट आर देयर. द रूट्स आर दे आर टेलिंग वेल डेवलप, अच्छे खासे रूट्स रहते हैं इसमें, और प्राइमरी रूट मीन्स फ्रॉम इनसाइड द रूट विल बी देयर. And here taproot also there. Stem you will observe strong hard, that is banyan tree. banyan tree की देखना stem एकदम hard रहती है. Leaf you will see as an reticulate venations. कैसे leaves इधर देखो observe करो. Just how the venations बोलते हैं ना here and there, not is like in a parallel. बोलते हैं ना reticulate venation मतलब alternate type. Parallel नहीं लगेगी, हाँ वहाँ लगी रहेगी. जैसे कि mustard tree जो बोलते हैं ना left part में दिया है. Flowers with four parts, 4 or 5 parts in their multiples, tetramerous or pentamerous. 4 means tetramerous they are telling, and 5 means pentamerous, means the flower can be in a multiple. बोलते ना जो फ्लावर रहता है 4 से 5 पार्ट में रहते हैं इधर. यहाँ जो फ्लावर्स रहेंगे ना 4 to 5 पार्ट्स में रहेंगे. But in the monocotyledon category, just observe, yes the single cotyledon seeds are there, roots are fibrous here, hollow, example bamboo are there, false, एग्जाम्पल बनाना. बोलते हैं ना इधर दिखेंगे मोनो में तुम लोग को बाम्बू ट्री में एकदम हॉलो लगेंगे, होल टाइप बाम्बू ट्री देखे ना, ऐसा लगेगा पूरा बाम्बू देखोगे ना, बाम्बू कैसा रहता है इनसाइड में, ऐसा लगेगा स्पेस पूरा खाली है. फॉल्स मतलब बनाना, ऑब्जर्व करो. एग्जाम्पल ऑफ द बनाना दे आर टेलिंग. डिस्क लाइक, एग्जाम्पल ऑफ द ऑनियन, डिस्क लाइक आर देयर, एंड देन एग्जाम्पल ऑफ द ऑनियन इज ऑल्सो देयर, ऑनियन एक्सेट्रा. तो ना यहाँ पे पैरेलल वेनिएशंस, जो यहाँ पे जो रूट्स होते हैं ना लीफ रहते हैं, लाइक है ना पैरेलल वेनिएशंस रहेंगे. पैरेलल पार्ट पता है ना कैसा रहता है, तो वैसे ये लीव्स तुम लोग ऑब्जर्व करो पैरेलल वेंटिलेशन की तरह रहता है. ये रहता है मतलब फर्स्ट अप एंड देन डाउन बाजू में रहेगा, लाइक है ना zigzag लाइनिंग. सीढ़ी कैसी रहती है, सीरीज भी नहीं, या तुम लोग ने देखे होंगे कैसे पैरेलल वेंटिलेशन रहे गार्डन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. बहुत से प्लांट्स ऐसे रहते हैं, फ्रूट्स जो बोलते हैं ना, जो फ्लावर, कुछ प्लांट्स ऐसे ग्रो होते हैं जिसके प्लांट्स ऐसे रहते, फ्लावर होते हैं, लीफ ऐसे रहेंगे, फर्स्ट zigzag लाइनिंग में रहेंगे, और पैरेलल तुम लोग को दिखेंगे. फ्रॉम लेफ्ट साइड यू विल ऑब्जर्व द ऑल लीव्स लाइक इन अ पैरेलल, एंड राइट साइड ऑल्सो यू विल ऑब्जर्व द लीव्स आर ऑल्सो इन द पैरेलल से. ये फ्लावर विथ 3 पार्ट्स और इन अ मल्टीपल ऑफ द 3 टाइमेंजेस. बोलते हैं जो फ्लावर्स रहेंगे ना इसमें 3 पार्ट्स में रहेंगे, और इन मल्टीपल ऑफ 3 टाइमेंजेस बोलते हैं ना 3 पार्ट में डिवाइड रहेंगे. यू जस्ट सी ऑब्जर्व द कोन हियर, भुट्टा तुम लोग देख रहे हो इधर, and the leaf how the venulations, parallel venulations are there. So these are the maize trees they are telling here, and the second one is in a mustard trees. Now kingdom plantia you will observe. Kingdom plantia they are dividing into 2 parts, cryptogam and the phanerogams. Here cryptogram are thallophyta, bryophyta and pteridophyta, and in the phanerogram you will observe gymnosperm and the angiosperms. Now angiosperm is also divided into 2 parts, dicotyledon and the monocotyledons. This is the end of the chapters. Today I will send the chapter of these notes also, and just write both the chapter notes 4th and the 6th, and be prepared for the science 1 and science 2 exam. That will be for 20 marks combining 1 and 2, 10 marks for the science 1, 10 marks for science 1 and 10 marks for the science 2.